why do you think कि लोग हाथ जब खड़ा करने की बात होती है, they don't want to come forward for the politics? सोशल स्टिग्मा जैसे बन रखा है कि पॉलिटिशियंस आर श्योर मेंटालिटी, करप्ट पीपल. ED has now arrested the former finance minister, Mr. Chidambaram. Sasikala and 2 others are now going to be most likely sent to jail. No, it is about being a policymaker, and now it is about development. Today is the right time to be a part of that change. See, development is there, 100% is there, but when it talk about corruption, it's also a part of the society. You find these young bureaucrats. A new joinee is at a 60 to 70,000 rupees monthly package. You're expecting a person who's getting 70,000 rupees to send his child to a private school, and in case of medical emergency, spend it. And then you expect him not to get into malpractice. Solution is to bring reforms to the salary mechanism. तो अभी तक लेट क्यों है? मतलब अभी तक लेट क्यों है? The unfortunate truth is, most uneducated crowd is in the politics, implemented by educated called bureaucrats, governed by the business class. So the entire system is flawed somewhere. A lot of people I met on my podcast, right, and they are bureaucrats, they're politicians. If you ask a certain question, they'll give you a very beautiful answer, but मुझे तो कहीं implementation दिखा नहीं आज तक. That's so true. But I think So first of all, thank you for being part of Impact Stories. thank you so much, Ankit, for getting me and trying to create impact through Impact Stories. So such a pleasure to be. Thank you, sir. Thank you. So first, I really want to know about your journey also. मुझे इतना पता लगा कि आप ऑक्सफोर्ड तक से होके और आपको इंटरनेशनल लेवल का एज पर द जितने गेस्ट आते रहते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोजर है. तो मैं चाहता हूँ हम जर्नी सर शुरू करें. और यू कम फ्रॉम वेरी हम्बल फैमिली ऑल्सो फॉर द ऑब्वियसली बीइंग अ ग्रैंडसन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी. तो मुझे लगता है वो जर्नी आपकी बड़ी रोलर कोस्टर रहेगी. तो थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करें तो. Yeah, to be very honest, it's a very difficult journey to keeping up to a name so high. If you talk about integrity, honesty, ethical issues, right? Shastri ji has been the epitome of it, right? 100%. हम लोग, when we talk about our lifestyle today, we all have worked very hard, and it is little materialistic in nature as well, because we want to give to our best to our children, चाहे वो education हो, चाहे वो gadgets है, चाहे वो whatever best you can think of, right? So once we start working towards it, that's what I keep telling in all my speeches, podcasts, that if I'm able to be even 1% of what Shastri ji was, it will be a good give back to the society in today's world. And journey has been very, very different for me. I'll start off from a story where, I am the fourth son's son, which is Ashok Shastri. He was with Tatas. That's why I was quite amazed when we talked about Tatas about this. So my mother also worked with Tatas. So I lost him when I was 2. So I have literally grown up under my mother's shadow and 2 sisters. So completely grown up with my women around me. And it has been a very difficult journey in life because mom was growing, she started working, and there were certain expectations from being from a family like this that, people tend to believe that you already have everything, but that was not the case with us. So every family has different kind of dynamics, economic situations, and from there we started up to a situation where we're very comfortable now, blessed due to Sai Baba. I believe that God has been very kind to us. Now, when you're talking about a family like this, there are so many expectations that people have, and they want you to deliver on it, whether it's to get into the electoral side of politics or to be very active into politics and be policy makers. One has to understand that everybody is not cut out for everything, right? Every actor's son cannot be an actor, every doctor's son cannot be a doctor, and every politician's son cannot be a politician. I have my keen interest in social entrepreneurship, giving back to the society, and I'm more cut out towards the administrative side, or probably in future, if God is kind enough, would love to be a part of the Rajya Sabha. But I'm not an electoral kind of a person. बिल्कुल. So I have realized that I have been doing youth empowerment for more than over a decade. And I tell everyone, if you make a group of 100 students stand and ask them how many want to get into startup, you'll see more than 65% getting enthusiastic these days.
How many want to be influencers? Probably 80-85% would just raise their hand. But if you ask them a straightforward question, do you want to get into politics and change? You'll not even see 1%. You'll, in a crowd of 100, maximum you'll see is 1 or 2 people raising their hands to be that change. What I keep requesting everyone is that, one should step in, instead of criticizing, be the change maker. Youth has the power today. And that's what the journey has been. And there's a lot about journey that can be talked, to be honest. A podcast itself, will get over if I talk about it. But a lot of ups and downs, have been working very, very hard, have been failures in life, have been failures in education. But then realize that, working hard is the only way out. So that's the one message that I could pass on. Definitely. आपने बोला भी that you work closely with the youth also. Obviously, you work through it. जो मुझे थोड़ी सी आपकी बात में एक बात समझ में आई, why do you think कि लोग हाथ जब खड़ा करने की बात होती है, they don't want to come forward for the politics? Why not? I think देखो एक सोशल स्टिग्मा जैसे बन रखा है कि politicians are dirty people or चोर bad बनते हैं, people, mentality, corrupt people. This is a mentality through media that I think plays. So people keep thinking that politics is a dirty game. Whereas if you look at today, politics was definitely, 3 decades back was a difficult game when it was mainly to do with casteism, religion, and now it is about development. And we are seeing a new India where 65% youth is the main power hub. So we need to have the right kind of, if you look at the generational shift in any of the political parties, under 40, you will not be able to name more than 10 people. Whether it is NDA alliance or it is India alliance or regional parties, you will not be able to do that, right? So this is a huge gap and a great opportunity. Jaise scenario has changed, social media has become very important. Similarly, political scenario has become important now. And it is very important that people change the narrative, and that can only happen on closed doors in discussions when we friends sit down, that no, it is not about corruption anymore, it is about being a policymaker and changing, and today is the right time to be a part of the change. But don't you think it just looks fancy on the screen when we talk about this thing, but when it comes on the ground, a lot of things come into picture? See, at the ground, do you think anything is easy? Any business, any startup, has it been a very easy life for you? Were you able to... We were talking about development. I see development is there, 100% is there. But when it talk about corruption, it's also a part of the society. We cannot deny the fact. Right. Yeah. So now when we talk about corruption, then today only when I was discussing with a couple of senior bureaucrats, and at the senior most level, the salary bracket is around 25 to 30 lakhs. Bilkul. That is when they are retiring. Yeah. A new joinee is at a 60 to 70,000 rupees monthly package. And imagine, just a hypothetical, being a third party, you're expecting a person who's getting 70,000 rupees to send his child who's to a private school, which on an average salary or fees is bare minimum 2 lakh rupees in a Delhi NCR scenario, even if it's a decent enough school. Right. Expecting him to live in a private bungalow because government does not have that kind of accommodation to give to junior officers. On top of that, spend on livelihood, and in case of medical emergency, spend also. It's not practically possible in 60,000-70,000 rupees. And then you expect him not to get into malpractice also. Right. There are people who survive. I'm not saying that That's they don't. difficult at this. It is a difficult scenario. We need to rework on the certain mechanism which has been very backdated. Our entire purpose has been India is a poor country. Politics is dirty. And now if you believe me, being traveled very well in the globe, I was feeling a little insecure. I had gone to the Basel summit for breaks. After 5 o'clock, police had told us, sir, don't step out. Anybody can snatch your chain or mobile phone and they can harm you. Media has created that Delhi NCR is, a place which is unsafe. Which is much safer. Which is much safer even at 2 at night for girls. Yeah. My sisters step out, my friends step out, and I think it's a pretty safe place. Right. We don't hear such kind of things happening here. There was it used to be. It used to be. Yeah. So, perception of India is also changing. Perception of all the professions are changing. And I feel it's not easy to do any part. Developing
or being a part of development of using the right kind of philosophy is very important. Today, when you sit down, you find these young bureaucrats, they have the mindset. No, it is not about just a concept, it is about how tangible benefits will come back to the country or society. And this is what the mindset have changed. For me, when I was growing up, there was a certain aspect, if you see that पुलिस वाला ठुल्ला मामा जो भी बोलते थे हम लोग उस टाइम पे, he would be a healthy guy, constable who would be taking bribe. Right. Mechanisms have changed where they get incentivized on challan themselves. They are not bothered about Bilkul. challan. No, they are not bothered about the bribe anymore. Bribe. Correct? No. And you saw fitter IPS officers. The younger youth is talking about healthy, fit India. They're talking about being digitally sound. They're talking about being multi-talented. They just don't want to do their government job. You'll see a lot of new bureaucrats working on social entrepreneurship, on causes, and they're trying to make a mark in the society. And all the entire, I feel there's a generational shift that we all are here to make something, give back to the society somewhere or the other. And this sense of giving back is what the change we are seeing in New India. मतलब I'm really stuck on the word जब आपने वो बात बोली ना कि they obviously what do you expect from a person अगर किसी का जेब ही खाली है और वो ऑफिसर भी है कोई भी है तो how he will obviously be a good citizen of the country, right? वो बात बिल्कुल करेक्ट और कहीं ना कहीं फिट बैठती है. Let's talk about the solution कि मुझे लगता है प्रॉब्लम पे तो पूरी दुनिया बात करती रहती है. आपको लगता है where gonna be the solution? Solution is to bring reforms to the salary mechanism. तो अभी तक लेट क्यों है मतलब अभी तक लेट क्यों है? We have come to the 8th pay commission, but I don't know, the process is too delayed by the governments. And why is it delayed? I don't understand. Because we have all the money to spend on infrastructure. We're not a poor country. We're the 4th largest economy now. And we're growing. Right. We have the money, that means, Bilkul. right? We need to implement faster. That's what the idea is. And we need to bring it to a corporate level. I, as a person today, पहले जब बात सिर्फ 50 साल पहले अगर मैं ब्यूरोक्रेट था, मेरी पेंशन सैलरी थी और मेरा दोस्त अगर बिलियनर भी बन गया था, शायद मुझे पता भी नहीं था कि अब तक उसका फोन नहीं आ रहा. बिल्कुल. Today there is a peer pressure constantly because of Insta media. में देख रहा हूँ यार मेरा बैचमैन तो फरारी चला रहा है, मैं तो यार सियाज में घूम रहा हूँ. शायद नहीं घूम रहा. बिल्कुल. This kind of mentality is set into the mindset, and there's a social pressure which everyone needs to realize, and we need to प्राइवेट लेवल तक नहीं ला सकते बट एक सर्टन लेवल को तो अचीव किया जा सकता है वेयर वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी ऑफ लॉट ऑफ पीपल व्हिच आई डोंट सी इट इन अदर कंट्रीज. आई हैव सीन प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स वॉकिंग विदाउट सिक्योरिटी इन डिफरेंट कंट्रीज. बिल्कुल. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड नेशंस. या रिसेंटली देयर वाज अ रील वेरी वायरल अबाउट द फ्रेंच president just walking in New York, right when he was stopped for the motor convoy of Trump. So these are very common incidents across the globe. इतना थ्रेट परसेप्शन, इतना वो सोशल वो बना रखा है पावर डिस्प्ले विच इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे छोटे छोटे एमएलए, काउंसलर, कॉर्पोरेटर, जिला परिषद, पार्टी का अध्यक्ष, मतलब they kind of put as if they are power brokers, no? They want to look like more what you call a term a bahubali in every in a small person. आप छोटे से इलाके से भी किसी को देखो लोग ये कंपेयर करते हैं, अरे तूने वहाँ के विधायक को नहीं देखा, तेरे तो वो जलवा है ही नहीं, सामने वाले विधायक का है. तो आई थिंक अगेन अ प्रेशर. Very true. So I believe that, instead of spending on such kind of things, the government really needs to work on providing the infrastructure, the medical facilities, the schooling facilities across the globe. We talk about sending children. I would love to send my son to a government school, but you give us schools to that level, right? Right. Who doesn't want to save money? बिल्कुल. Everybody wants to. आज तो बहुत कंपटीशन भी है. प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना एक अपने आप में चैलेंज है. चैलेंज है. So I feel that better या तो आप सैलरी बढ़ाइए या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे ले आइए. Right. That people are not confused or thinking twice about putting their children there, or so ultimately light. And how will this happen? It comes boils back to the youth. जब तक we don't have the right kind of people making those decisions, the unfortunate truth is most uneducated crowd is in the politics, then implemented by educated bureaucrats, governed by the business class, again educated with power and money. So the entire system is flawed somewhere. That the main policy makers are not making concrete sense, they're just looking for vote bank politics. And that's what the primary goal is, कि अगली बार मैं कैसे हूँ,
It was not a permanent solution for them. जो power hunger है वो that's too strong. Then that will remain there, obviously. वो तो That will रहेगा, remain. मतलब But उनको अगर equate कर दोगे, उनके perks को equate कर दोगे, तो they will also try not to divulge into other aspects. If being ethical, अब जो करना चाहता है उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना. That is one individual's thought. But overall perspective देखा जाए तो I think that a better economy can flourish if the entire payment mechanism, whether it's MP, whether it's bureaucrats, is improves. Salaries for police wala to everybody should improve, and that is what the need is now. चलो मुझे और आपको सोल्यूशन भी पता है, थिन लाइन भी पता है, तो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है. ऐसा थोड़ी हमें पता है और बाकियों को पता नहीं है. Implementation का issue ये है कि people think that they are used to working in certain manner, and in spite of giving the right kind of payments, that system won't change. Believe नहीं है अभी भी. But this has to be done in a trial manner. आप छोटे जिला से start करिए, district से start करिए. Let it be an example. बिल्कुल. Don't implement it on a large scale. So a lot of times when you decide a policy, it's not necessary that it will work in the entire nation equally. And अब 140 में एग्जैक्ट सही 140 डिग्री में हम करेक्ट तरीके से करें कुछ भी, वो तो हो नहीं सकता डेमोक्रेटिक सेटअप में. दैट्स व्हाट द आइडिया इज. आई फील कि हम लोगों को रियली वी नीड टू segregate of smart cities. Except for few, none of them really worked out very well. Uran scheme did not work out very well. बिल्कुल. But all beautiful schemes. Policy wise, there was nothing Right. wrong with them. Right. Implementation was the problem. Implementation. So implementation is something which the brightest of minds are sitting there as bureaucrats. They have aced through exams, but somehow implementation did not happen. So I feel that open network channel for public opinions to be taken in is a great aspect that all government should keep it into consideration. जो भी अपना फीडबैक देना चाहता है मैकेनिज्म को लेके, शायद हम दोनों अच्छे नहीं हो बट तीसरा कोई आदमी और अच्छा सोल्यूशन दे. बिल्कुल. हाँ, पॉडकास्ट सुन के शायद और कोई कुछ Solution, है 100%. बट उस सोल्यूशन को पहुंचाए कैसे? कोई माध्यम ही नहीं है. वी शुड हैव अ प्योर communication channel to the right policy. You know why I asked this question? Because whenever, again, you said the same thing. A lot of people I met on my podcast, right? And they are bureaucrats, they are politicians. सबके पास solution है, but वो है कहाँ? It is not coming out. Yeah, everybody, if you ask a certain question, they'll give you a very beautiful answer and talk about certain things which is need to be implemented. But मुझे तो कहीं implementation दिखा नहीं आज तक. That's so true. But I think but change तो धीरे धीरे आया है, and I think changes अब थोड़े rapid भी हो. Rapid भी हो गए. Actions भी rapid हो गए. For the longest time, I think UP Bihar was considered a very terrifying state. Hooliganism, Right. Bahubali, Right. mafia, sand mafia, whatnot. Everything has decreased. I feel तो अगर सही leadership आए, for that matter, Modi ji is a very good example. Right. When I was studying, there were restaurants where they would not entertain being an Indian or skin color, or whatever the reason may be. I was shopping for my wedding back then. I was on Oxford Street and I was inside the Yoga Boss showroom. And you'll not believe the person asked me to step out because there was a Saudi family coming in. So he said, can you, very politely, not being rude, but can you come in? There are certain reservations in the showroom. I thought, okay, fine. I went out, I came back after and I hardly made any difference because I was anyhow shopping. But later on when I went back, I felt that उसने लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, but I also had gone and I was a buyer, but I was neglected. And post 14, after the Prime Minister, the global perspective of Indians has to. They are more welcome to whichever store we get into. There have been incidents from the Maharaja's time. There's a very famous story ना कि वो Rolls Royce लेने गए थे और पहनावे की वजह से उनको भगा दिया गया था. And got them for garbage. So, you know, that factor has changed. That India perspective has changed. We are no more a land of snake charmers for the global world. And I feel that our businessmen and our
entire contribution, even our voice has changed. Voice has made a very huge difference in the global society. We are heard better now. And that's because of your leadership. So I think leadership plays the most important role. And any state, any government, any governance can only implement what they want to if your leadership is strong. Are you're saying this thing because you support BJP, that's why? No, Okay. It's a neutral take. it's a neutral thing. Okay. No, for me, if you ask me, so there are technically 3 prime ministers apart, my grandfather being my favorite, not just mine, globally. I completely agree till India, the best prime minister on your platform, I'll say it very, very blatantly, he's one of the best. But if you count about it, then I really like Narasimha Rao from Congress because he was very, very dynamic. He was the one whose brainchild was FDI was Narasimha Rao's brainchild, executed by Manmohan Singh, which obviously he took the fair to the panel. But Narasimha Rao was the main guy who did it. And that was a great opening for the Indian economy. And then if you talk about Atalji, his vision was very strong. As a leader, he was an excellent leader, I'll not deny that. But somehow implementation was not that good, and that is why the defeat happened. Shining India ka better version is making India another aspect better, which we're talking about. But now when we talk about Modi's leadership, yes, his alone leadership, little autocratic in nature, but with a control mechanism which is decentralized. So there's a sense of fear of what you should have for a leader or leadership if you're working under, but doing the right things and making sure the propaganda is spread out in the right manner. See, being as a youth, I will not deny the fact कि हाँ ये बात सच है कि ग्लोबल इमेज को इम्प्रूवमेंट हुआ अपनी ग्लोबल इमेज, और लोग पहले कहते हैं यार आप इतना पैसा बाहर जाके क्यों खर्च कर रहे हैं. मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, मीट एवरीवन, बिकॉज क्या होता है कि आपकी जो इंटरनेशनल इमेज होती है वो आपके हर सिटीजन के लिए काम करती है. अग्री टोटली. देन कम्स टू सेकंड पॉइंट, जब हम इस देश में कहते हैं कि गौ माता का मांस या फिर कोई मांस खाना ये है, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर. Correct. राइट. देन कम द सेकंड पिक्चर व्हिच एवरीबॉडी कम्स एंड टॉक अबाउट. तो मुझे लगता है कि वो कौन सी इमेज पे मैं उंगली रखूँ, ये इमेज सही है. Yeah, if we talk about export, import, or there's something called necessity and demand. ये बोलना चाहिए ना साफ साफ. इट्स अ डिमांड. या बिल्कुल. इसमें और इसमें आमदनी अगर कोई कमा रहा है, and to be very honest, one of the biggest meat suppliers is from Jain community. बिल्कुल ठीक है. And Jain community is totally against प्याज लहसुन also, to garlic and onion is also prohibited, I guess. But अब कोई बिजनेस कर रहा है तो गलत नहीं है उसके लिए. और सी पोलराइजेशन का जो हिंदुत्व का डिमांड है, लेट्स बी वेरी एजुकेटेड अबाउट इट, राइट. Beliefs are something very different, and then pressurizing it or forcing it on others is something very different. Okay. टोटली अग्री. I personally, to believe in the aspect, I am a non-vegetarian, but I eat my chicken, mutton, and fish, seafood. I'm not again in the favor of eating either pork or. राइट. दैट इज योर पर्सनल Personal. थिंग. या But I would never force anybody to either get into eating of non-veg or. But someone cannot dictate the terms to me that आप हिंदू हैं तो इसलिए नहीं खाते. If there are so many of my friends who do eat, and I don't think there's anything wrong with that. But that's just our society talking. But what about the mindset of, now let's come to the rural India. They are being brought up with the thought कि ये हमारी माँ को मार रहा है, ये हमारे. So there are very drastic thoughts behind, which is very wrong. आज जो हम लोग रीजन बायस, आज बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे में मैं जैसे मैं जानता हूँ, मेरे काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं जिनको रेंटल में बहुत डिफिकल्टीज आती है, बॉम्बे में, नोएडा में फॉर दैट मैटर, एंड इवन इन दिल्ली. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. होता है. बिल्कुल बिल्कुल. Religion has become a parameter to lease out your property. But there are times like me being from a particular family, if I have to lease out even a commercial space, I find it very difficult because they think, yeah, how will we take out the lease out of him? Or, but everybody is not bad, everybody is not mean. राइट. It is again that social stigma we started over the first question ना, कि आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है डाल दिया. कि यार रिलीजन का है, ये पॉलिटिक्स का है, तो ये चोर होगा या ये गुंडा होगा. That is something which we have to change the narrative, right? राइट. हम लोग कहाँ किस तरफ बढ़ रहे हैं is the actual question. राइट.
कि हम जब दो चॉइसेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हमारे को ट्रांसपेरेंसी में, क्लैरिटी में बात करनी चाहिए. एंड नन ऑफ द लीडरशिप ओपनली टॉक अबाउट दिस इज लाइक द चाइनीज कम्युनिकेशन. वो गेम नहीं होता चाइनीज विस्पर, ऊपर तो कुछ बोलते हैं, नीचे आते आते तक ये हो जाता है. Whispering. The situation is totally changed, and I think that is something wrong. As leadership, one should make sure that his message is loud and clear. Right. You know, somebody asked me long back कि why don't you interview many of the politicians on your show? तो मेरा जवाब ये था कि जो मैं वही आपकी चाइनीज विस्पर वाली बात, जो मैं सवाल पूछूं और जब वही जवाब मेरे पास आए तो शायद वो मज़ा भी आए, और जब मैं सवाल ही कुछ पूछूंगा जवाब ही कुछ मिले तो शायद वो फिल्टरेशन हुआ, वो फिर वो मैंने जस्टिस नहीं किया अपने शो के साथ. यू अग्री टू इट? Totally agree to that. बिकॉज मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जहाँ मुझे क्वेश्चन सामने से मिला था, तो मैं उसका जवाब क्या दूं? What's the point? When you're just a talking mouthpiece for Right. emotion of one ex person, which Right. does not make sense. राइट. तो मुझे लगता है लीडरशिप में बस यहाँ पे है कि अगर आपके जो ये वाली बात आई थी, चलो अब हिंदुत्व की बात करते हैं और आपके बड़ा इमोशनल साइड की बात करते हैं, फिर आप डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए. आप अगर गाय को जाके देखेंगे तो जब गाय दूध नहीं देना बंद करती है तो स्लॉटर हाउस ही भेजना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं बचता है. आओ कोई निकल के बाहर उसे पालना शुरू करो. मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई लोग बचे हैं. तो आई थिंक रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर, शुड नॉट ब्रिंग टू सच अ स्टैचर जहाँ पे आप पूरी कम्युनिटी को डिवाइड करना शुरू करते हैं. एज अ यूथ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. I totally agree with you. I have seen, but for that matter, post Palma attack, and we saw that a lot of Muslim community leaders have been very anti-social, like Owaisi ji, to everybody. They very well talked about being nation first and talking about being patriotic. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जागरूकता आ रही है कि हम लोगों को रिलीजन बेसिस पे अब आगे अपना लीडरशिप नहीं. बट अब अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि द अनएजुकेटेड क्लास, Will always remain the same. you talk now let's draw parallels to what happens. आपका पॉडकास्ट जब तक टीआरपी, जब तक सेंसिटिव और क्रिएटिव टॉकिंग है, तब तक मेंटेन टॉक करेंगे तो शायद फेज आउट कर जाएगा इवेंचुअली. सिमिलरली वो क्रिस्पी टॉपिक बन रखा है मीडिया के लिए, जब तक वो कुछ ऊटपटांग नहीं बोलेगा, ऊटपटांग नहीं करेगा, रिलीजन के बारे में बात नहीं करेगा बिल्कुल. कि हमारे को इतना रिजर्वेशन दो, हमारे को ये दो, हमारे को वोट दो, तब तक तो, और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है फिर से. तो अपने आप को, द आइडिया इज आदमी को अपना सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच छोड़ के देश के बारे में सोचना जरूरी है. बिल्कुल. कि आज मैं रहूं ना रहूं, मेरा क्षेत्र डेवलप करे वो नहीं है, मैं हमेशा रहूं इस क्षेत्र में, ये जो थॉट प्रोसेस है दैट इज रॉन्ग. टोटली. अब मैं यही सवाल में एक और एडअप करता हूँ. लेट्स से सब लोगों ने बहुत तारीफ की, मैं बहुत न्यूट्रल टेक पे बात करता हूँ कि आप सरकार ने दिल्ली स्कूल को बहुत चेंज किया, ब्यूटीफुली, आई एग्री टू इट. बट कौन सा ऐसे आपका नेता का बच्चा है जो वहाँ पढ़ता है? चेंज में आई थिंक चेंज मेकिंग इज दिस ना, यू फर्स्ट सेट एन एग्जाम्पल, देन यू टॉक अबाउट दैट वी हैव डन समथिंग इनक्रेडिबल फॉर द पीपल. तो मुझे लगता है वो चेंज मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो इतना, अगर आपका स्कूल और सब कुछ इतना अच्छा है तो शायद मैं भी अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा सकता हूँ. करेक्ट. For that matter, I visited my cousin was MLA द्वारका through आप, और मैं गया था, मैंने देखा भी था और स्कूल बहुत अच्छा भी लगा था. But I don't see my children still going to that because of the branding sphere. वो हमारी शुरुआत में जो बात हो रही थी वो नहीं हुआ है अभी तक. मैं I'll tell you, जो इस बारे में ना, जब हम शास्त्री जी से शुरुआत की तो उसमें ये डायलॉग मैंने जब बताया ना एथिकल इंटीग्रिटी का, एक जब सोमवार से PL-14 व्हीट आ रहा था, नॉट एडिबल फॉर ह्यूमन ब्रेन, अमेरिका से आ रहा था, जब जय जवान जय किसान का नारा दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की बात कर रहा हूँ. तो शास्त्री जी ने 3 हफ्ते तक, 21 दिनों तक अपने बच्चे, अपने परिवार को एक वक्त तक खाना खाने से रोक दिया. बिल्कुल, एक टाइम का मील स्किप करने की. उसके बाद उन्होंने रेडियो पे अनाउंस किया कि जब मेरे बच्चे अगर कर सकते हैं तो एक दिन हफ्ते में तो सभी कर लेंगे. जब 21 दिन मेरे, और देन माय फादर वाज हार्डली 11 years old that time. तो कैन यू इमेजिन, ही मेड श्योर कि अपने बच्चे भी भूखे 21 दिन तक कंटिन्यूसली एक मील में, बिल्कुल. तो फिर पूरा देश कर सकता है. दैट इज द सेल्फ इंटीग्रिटी दैट यू टॉकिंग अबाउट. हर किसी में होना जरूरी है. बिल्कुल. आप अगर कोई चीज को सुधार रहे हो तो यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन दैट मैनर, राइट. कि मैं अपने बच्चे को भी यहाँ भेजूंगा, अपने 4 दोस्तों को भी बोलूंगा भाई यहाँ कराओ, बिल्कुल. और तब वो चेंज स्टार्ट होगा. तब शायद अब इस माइंडसेट सोचेंगे कि स्कूल में अब लूपहोल्स हैं कहाँ, मैं उसे इतना अपडेट करूँ कि मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ सके. करेक्ट. वो ब्रांडिंग चेंज करो ना. आप प्राइवेट स्कूल को इतनी फ्रेंचाइजी दे देते हो. आई थिंक दिल्ली सरकार ने 2000 स्कूल से ऊपर है,
बट 200-250 ही एक्चुअल कैपेसिटी में है जो बिल्कुल। मैं उसी सरकार को समझना चाहता हूँ जो एक तरफ बात करती है कि हम पुअर स्ट्रेटा या सेगमेंट के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, दूसरा प्राइवेटाइजेशन पे इतना कंट्रोल रखा हुआ है कि उसे थोड़ा सा लेवरेज दिया हुआ है कि आप और बढ़िया तरीके से थोड़ा सा और पुश करो लोगों को। तो मुझे लगता है वो बैलेंस है कहाँ पे? बैलेंस है ही नहीं ना। द टुडे यू आर एन नंबर ऑफ स्टेट्स गिविंग इंस्टीट्यूशनल लैंड्स टू प्राइवेट प्लेयर्स, बट एक प्राइवेट कॉलेज आप मुझे नाम का बता दो जिसमें आप जाना चाहते हो, सरकारी कॉलेज या सरकारी किसी भी स्टेट में, एक्सेप्ट फॉर योर मेडिकल एस्पेक्ट, एम्स और ये सब छोड़ के, टॉप जो IITs को छोड़ के, बट देन व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट जो बेस है, फाउंडेशन है? स्कूलिंग को टोटली इग्नोर कर दिया हम लोगों ने। केंद्रीय विद्यालय डू प्रीटी वेल इन सर्टन प्लेसेस। राजस्थान केंद्रीय विद्यालय जोधपुर इज अ वेरी सॉर्ट आउट ऑफ स्कूल, यू डोंट गेट थ्रू देयर। और your army schools like Air Force and all, then Air Force Bal Bharti in Delhi is a very sort out of after school. But क्या करे आदमी? But उसमें limited seats हैं. Why can't we replicate such things mechanism? They can, right? They have maintained their standards. They've created a brand name for themselves. So why are we not able to do it to other Kendriya Vidyalayas? Brand name KV is not a bad brand name. It's a good brand name. But why are we not able to give that kind of infrastructure? और आज की डेट में सारी सरकार फ्री में लैपटॉप दे रही है, आईपैड दे रही है, फोन दे रही है, बच्चों को दे रही है, सब चीजें दे रही है, कहीं भी किसी चीज की कमी नहीं। इंटरनेट की पेनिट्रेशन हाईएस्ट है वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर। बिल्कुल। उसके बावजूद वेयर आर वी लैकिंग? द क्वेश्चन इज नाउ टू आस्क टू आवरसेल्व्स, वी आर लैकिंग बिकॉज आवर एस्पिरेशंस आर वेस्टर्न। अभी मेरे पीछे रील देख रहा था, कोई गया हुआ था IIM अहमदाबाद, उसमें एक सीढ़ी कहते हैं हार्वर्ड स्टेयर्स कहते हैं, बेसिकली ग्रेजुएशन वाले डे पे वहाँ पे फोटोग्राफ होता है। ओके। हमारी मेंटालिटी कितनी खराब है आज भी। हम वेस्टर्न पे IIM के अंदर खड़े होके हार्वर्ड स्टेयर्स लिख रखा है, हमारे विलेट और से ऐसे नाम है सारे सोसाइटीज के। आप बॉम्बे चले जाओ, भुस्ते जो वर्ली में है उसका नाम भी बेवरी हिल्स या कुछ है ना, राइट। वर्ली में घुसते ही है बेवरी हिल्स बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। We are so mesmerized with the Western charm since before independence और अभी तक कि हम लोग कुछ सोचते ही नहीं करंट चीज़ों के बारे में कि हमारा क्या है, हम लोग क्या सोच कर सकते, उसको आवश्यक रखने से क्या IIM की वैल्यू कम हो जाती है। So this is a mentality change which is required from, so वो जब mentality change कॉलेज और स्कूल को लेके भी होगी, जब मेरे बच्चे को उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ हॉर्स राइडिंग भी मिल रही है, जहाँ स्विमिंग भी मिल रहा है, और वो सरकारी स्कूल होगा, आई वुड लव टू ट्राई। अभी भी मैं ट्राई बोल रहा हूँ, माइंड इट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई वुड साइन अप, बट उसका कहीं ना कहीं शुरुआत होना तो जरूरी है, एंड दैट विल ओनली हैपन विद पीपल लाइक अस। जब आप उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मॉडल स्कूल दो, जिसमें सारे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक बच्चे जाएं, बिल्कुल रिजल्ट्स देखो। बिल्कुल। जब वो चेंज स्कूल का नाम तो बाद में चेंज तो तब ऑटोमेटिकली बनेगा ना। 100% अग्री। मुझे एक और जो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है आपसे पूछने, मुझे लगता है कि लेट्स से योर रूट स्टार्ट फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री जी की फैमिली से, आपकी इनिशियल जो पॉलिटिकल रूट है वहाँ से शुरू होता है, बट वो तो आइडियोलॉजी अलग है, वो तो कांग्रेस आइडियोलॉजी है, आप बीजेपी आइडियोलॉजी को फॉलो करते, तो इतना मिक्स, इतना चेंज, और वो आया कैसे वहाँ से? टू बी ऑनेस्ट, माइग्रेशन ऐसा हुआ कि पोस्ट माय फादर्स डेथ, Advani ji really approached my mother, and my mother was since the beginning 89 में she joined BJP, और BJP ऑफिस जो 1100 करोड़ था 85 में अलॉट हुआ था, बल्कि इनिशियल मीटिंग्स आल्सो of the top heads that time, it was more like a family, happened at my house, at Shastri ji's house, BJP meetings were happening, ठीक है। तो दादी माँ से जब पूछा ना, तो दादी माँ said कि तुम्हारी आइडियोलॉजी जिस चीज को सपोर्ट करती है उसको तुम प्रमोट करो। तो दैट वाज द आइडियोलॉजी दैट वी ऑल हैव ग्रोन अप विद। आई ग्रो अप अमंग्स्ट द बीजेपी पीपल, मेरी लाइकिंग ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स हो गई, एंड आई एम अ बिजनेसमैन माई सेल्फ, एंड द बीजेपी थॉट प्रोसेस स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट side of the economy, which everybody knows. There's nothing to hide about it. So I feel that, that was more towards, I am not a socialist or a leftist kind of a person. So that's where my ideologies could not have never met with that. And what do you think, where Congress is going wrong?
Congress going wrong because they've supported socialism for the highest time, but all their leaderships are the most flamboyant. Okay. Getting down from the best of caste to traveling to the best of world. And somewhere I feel the choice of leadership is high time. We have leaders like Sachin Pilot, we have leaders like Shashi Tharoor who are not being promoted. And how long will they be in the game? All the elections, we see the Congress diminishing and getting zeros, literally. And regional parties gaining more strength. The biggest flaw is one has to step down as leadership and create the system back again in the organization and then get back on the top. Prove your worth to be at the top. I'm not calling it nepotism, but then I feel that, like I said earlier, that हर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है. बिल्कुल. Probably Ralji is great at finance and other places, right? He's good at marketing, whatever other aspects that he wants to do in life. But he probably is not cut out to be into politics. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीनियरिटी की बात करूं तो शायद कांग्रेस के बाद जितने सीनियर लीडर्स थे शायद में बीजेपी के पास भी नहीं थे इनिशियल स्टेज पे. Correct. बट आई थिंक वो कहाँ गए, चले गए या कैसे गायब हो गए वो मुझे नहीं पता. दैट यू कैन टेल अस बेटर. See, everybody, like I said, is power hungry, right? कोई CM था, कोई ministers था, and then they realized that they don't see Congress coming back. They either joined allied forces or some or the other. Or some of them retired on their own. They said that we've had enough of it and our loyalty towards and thought processes towards Congress. We'd rather not be active anymore. But that's an unfortunate part. Just to make sure that one part of the family is heading it forever should not be the reason for any democratic party to lead the country or support. Today we talk about a leader of opposition, but and in spite of having good number, I don't see any strong opposition coming into place. For the first time, we lost and a great leader. We just somehow managed to make the government, to be very honest, right? And the opposition is strong today. But we don't see that kind of opposition happening. So that clearly shows even as a leader for opposition, which is a very key position in a democratic setup, we are not able to raise voices. And if you look at the parliamentary debates today, they're more hilarious, whether it's the sitting party or the opposition. They're hilarious debates. No concrete questions are being put up. So when you go into the dynamics where any member of parliament, when he puts up a question and is asked to the minister from the opposition side, there's no relevant question that is coming up that can be backed by data so that it creates pressure on the ministries. Like any example you can give? I remember about something to do with avoiding western part of the world where the opposition leaders, the Tenderhood or someone was just talking about McDonald's ko boycott kare, Donald Trump ko avoid kare, some kind of that concept. But is it this is what you are being chaired and being elected for? Right? But then there are good speakers as well which don't even hit the limelight, they don't even hit the race, they don't even, because they're not worthy of creating that TRP. Right? बिल्कुल, which plays a very important role also today. And पहले क्या होता था कि as a fact, citizens can write to the member of parliaments to put up questions, which a lot of people are not aware of. As a constitutional right, most of us are not aware about the electoral process. We are not about how we can be a part. We can also be advisory part to the parliamentary committees as citizens. And people of India are not aware. So, आज अगर आप pharma industry से हैं, तो you can very well be a part and recommend to the parliamentary committee of the health that advises the health minister. But लोगों को पता ही नहीं. बड़ा एक हिलेरियस सा क्वेश्चन है. एक बार मैं इंडिया ईडी चीफ को इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि मैंने बहुत जगह सुना है बात कि जो ईडी होती है फेवर्स द करंट गवर्नमेंट, राइट, कि किसी को भी पकड़ना है तो भाई अब करंट गवर्नमेंट के हाथ में. तो उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या ईडी ने आज तक ऐसे किसी इंसान को पकड़ा है जिसने कोई क्राइम ना किया हो?
सेम। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ईडी ने अपना काम सही किया है, किसी को किसी समय में किसी को सजा मिली है, किसी को किसी में सही सजा मिली है, करेक्ट। सेम क्वेश्चन कम्स टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है। अब बीजेपी अगेंस्ट ने बोला कि आपने काफी फेक वोटिंग करवाई है, बट आंसरेबिलिटी तो कांग्रेस पे भी आती है। हाँ, तो that's why the matter got shut, no? Ultimately, हाँ, people didn't. तो मैं कह रहा हूँ वही मैं आप हमारा पॉडकास्ट करने का रीजन था कि हम एक यूथ है, एक मिडिल रोड तो बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। देखो, सिस्टम है, फ्लॉड होगा, ह्यूमन है, एरर होगा, राइट? परफेक्ट। एडमिट करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होगी। दिस इज अ प्राइमरी एस्पेक्ट। नाउ लेट्स कम टू कि आदमी जो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, चाहे हम करप्शन की बात करें, अब चिदम्बरम केस देख लो, अमित शाह जी को डाला था जब वो पावर में था, so it is vice versa, it keeps happening, right? And today when we talk about being neutral, that is not happening. हम लोग की जितनी भी CBI, they are politically forced, which is not an independent authority. जो हम लोग बात कर रहे थे इंटेग्रिटी की, कि बिल्कुल। क्यों करना चाहिए, all these authorities should be independent in nature. They should not get pressurized, but they get pressurized because उनकी top positions are posted through political pressure. Somehow it is interlinked, and ये system जब तक interlinked रहेगा तब तक वो, हमारे जुडिशरी का ही देख लो, मुझे तो ये नहीं समझ आता, एक लौता सिस्टम है जो अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, लॉर्डशिप, कि भाई समर हॉलिडे 1 महीने की, क्या उस 1 महीने में केसेस आने बंद हो जाते हैं? बिल्कुल। पेंडेंसी 15-15 साल की चल रही है, इमरजेंसी बेल्ट रख देते हो उसमें, वो डिसाइड करेंगे। अब डॉक्टर बोलते कि मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, सिर्फ इमरजेंसी केसेस, एम्स बंद हो रहा है 1 महीने के लिए, इज इट पॉसिबल? या आप बोल दो कि मैं 1 महीने काम नहीं करूंगा, आम आदमी बोल रहे हैं कि तनख्वाह आ जाएगी उसकी, 1 महीने ये, दिवाली के 2 हफ्ते अलग, हाफ द टाइम कोर्ट इज शट। व्हाई इज दिस मैकेनिज्म देयर? We really need to start asking the right questions as yet. And there are major drastic steps that need to be taken. Political retirement 65 mandatory करना चाहिए. Judiciary holidays should get over. Interdependence on political influence of appointments on judges or ED, all these enforcement parts should be over. They should be independent in nature, rather elected in nature. They should be done in a democratic manner. Standing person can only be an IPS or a bureaucrat. Cannot be a civilian, but Right. should be in a democratic setup. तब वो असली आदमी जब ईडी चीफ बनेगा, तब then you will see ना the government also working in the right direction. बिल्कुल। Whether it's the sitting minister or the next minister, they all will function in a better manner. Ideological situation, but that is the fact, and that is what is required now. Not just politicians have to be elected, but the right key candidate has to be elected at key positions. बट क्या होता है, हर किसी का ना अपना एक जवाब होता है। लेट्स से हम वो छुट्टी की बात कर रहे थे, लेट्स टुडे टुमारो आई एम गोइंग टू इंटरव्यू एनी जज, ऐसे तो वो कह देंगे भाई मैं भी एक इंसान हूँ, कब तक काम करूंगा, मुझे भी तो छुट्टी चाहिए। बेटा को they give us, yeah, they give you a counter back कि ये है। Totally get the counter back. They're used to that mechanism. But ऐसा कौन सा आर्मी वाला है जिसको छुट्टी की जरूरत नहीं है? ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जिसको छुट्टी की जरूरत नहीं है? बैलेंस वे होना, बैलेंस तरीका होना चाहिए। The entire system cannot go off. भाई डिवाइड, अगर 100 जज हैं तो भाई 10 की छुट्टी दे दो बीच में, 10 की दे दो, 10 की दे दो, 10 की दे दो, तो भाई अपने में तो निपटी जाएगी, सिस्टम तो बंद नहीं होगा। 90% of the judges are going to be functional. बिल्कुल। What is wrong in that? If there is a will, there is a way. राइट। And if you start finding excuses, राइट। वो excuses तो कुछ हो ही नहीं। Assumption तो सबसे खराब चीज है आदमी के लाइफ की। So you are the chairman of Indian Institute of Governance and Leadership. What all things we do under it? So this is basically a certificate program where we enroll batches. There go 3 programs: international relation, governance and policy research, where modules have been developed through bureaucrats and top professors, and they do mentorship program also online. It's a 6 months program where we try to integrate the students and teach them about what all current policies are. जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या XYZ, मतलब there are so many policies that are existing towards it and people are not aware.
So our goal is to promote because benefits बहुत सारे गवर्नमेंट देती है बट somehow उसकी नॉलेज मिलती नहीं है. अच्छा. जैसा अभी मेरे को रिसेंटली किसी ने पूछा कि 100 years ऑफ RSS हुआ ना अभी, तो उसके कॉइन निकले थे, कमेमोरेटिव कॉइन्स ऑफिशियली रिलीज हुए थे. दोज कॉइन्स यू कैन बाय थ्रू RBI. कि किसी का मेरे इंस्टा पे ही आया हुआ था, सर वेयर कैन आई फाइंड दिस कॉइन्स टू बाय. तो बट बेसिक चीज़ें भी लोगों को नहीं पता होती कि कैसे मिल सकता है, रेयर स्टैम्प कैसे मिल सकता है, पॉलिसी कौन सी मदद कर सके. स्टार्टअप के अंदर कितने लोगों को ये नहीं पता कि LLP और प्राइवेट लिमिटेड होना ज़रूरी है टू गेट होल्ड ऑफ द स्कीम बेनिफिट्स, चाहे वो ग्रांट है चाहे वो कुछ हो. उद्योग आधार होना ज़रूरी है. सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स विच थ्रू माई इंस्टीट्यूट, नॉट द स्टार्टअप पार्ट बट policy part we try to implement. Now we are also trying to start with the new member of parliament's training program. अच्छा. जो भी पहली बार प्रधान MP बन के आ रहा है उसको हम ट्रेन करेंगे कि आप कैसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, कैसे आप अपनी जनता से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो, आप कैसे अपने MP लैड फंड को एग्जीक्यूट कर सकते हो. जस्ट एज अ सजेशन टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर इंडिया. बट कैसे बेटर इंडिया में क्या उनको मैंने वो तो मैनिपुलेशन सीखते हैं, वो भी सिखाते हैं क्या? नहीं, मैनिपुलेशन तो नहीं सिखाना है हम लोगों को. तो बेसिक ये बताना है कि MP लैड फंड अगर आपके पास है तो यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर. स्वेज कहीं खराब है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, रोडवेज अगर आपको खराब है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन टू walk towards it. A lot of time what MP do, she's right to the state. Yeah, sit back and give. Sit back नहीं, वो Later वही sit back ही हो सर, वो सर. हाँ. They'll keep waiting, but then you do have funds to execute. All you have to do is create an explanatory of your expense, which is not very difficult. But problem क्या है, कोई भी अपने कंधे से बंदूक चलाना नहीं चाहता, दूसरे के कंधे पर रख के ही चलाना चाहता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम. तो this is where we are lacking, and I see a lot of prominent MPs who have returned their MP lad fund and not executed anything out of it. That's a loss to the economy. Right. That's people's money that they were getting and they did not. One more thing you lead is BRICS CCI. And what all things? Oh, so BRICS. It's an international project. We have chapter. BRICS is Brazil, Russia, India, China, South Africa and plus nations. There are 11 nations as members and partnering nations as well. So we're on 21 nations now. So why you thought of getting there to? So I frankly believed in, somehow I believed that as a developing nation, India never had a voice. And that's my thought process since I was growing up and studying. And then I read about the term BRIC, which was before South Africa, back in 1998. I was reading a paper in my library in Oxford when I was studying, and I was reading about it and I said, yeah, this really makes sense. The developing nations, if they get together, and Russia, India, China, when I read, is a very good combination because historically we have been very close. Ups and downs have but we have been close. And economy wise, we can very well support it. So I started taking interest, participate in other dialogues also related books, and officially joined BRICS back in 15. And slowly I saw the shift also in the BRICS mechanism. Earlier it was just a term where state heads met, and then it phased out to a point that we are talking about global south as a power. Somehow the founder, Bibil Madhukur, he's like my mentor. And we had discussed BRICS a lot many times because he founded the chamber and his ideology was about BRICS and beyond from the beginning. Which I always laughed about it. I don't think this will grow. But he had that vision and we saw BRICS Plus happening. And for that matter, in the lunch today, I was with him and he told me, hey, see, things are changing the way we thought, the way I imagine. He's a 93-year-old man. 93-year-old man. Sure. He envisioned it back 10-12 years back, कि भाई ये ऐसा 13 years back कि ऐसा होना है. And he was in his 80s. My God. So when you talk about experience, that is the real experience that you can actually see what changes can happen. And now with the amount of pressure US trying to put through tariffs, we are giving a solid message back, whether it's going through SCO, three reasons standing together. We're not bending.
UK FTA happened in favor of India. Europe FTA will happen in favor of India, and BRICS is in favor of India. Hum as businessmen, what else? So as industry body, what do we need? So I really thought that my visions really aligned to the concept of BRICS. Until time it's not geopolitical in nature. Rest of the power blocks like G7, they're all geopolitical in Right. nature. BRICS whole agenda is trade, sustainable development. And if you read all the declarations since 12 till now, they all primarily talk about this. And this is what the goal is. And today we are going to be presiding to the BRICS presidency in 2026. And we have been meeting up a lot of bureaucrats, and they've been talking about it, that we are not just looking to have events for B2B and networking. We are primarily looking as a chamber to make sure that ये event और इंडिया को tangible क्या मिल सकता है. अच्छा. आज अगर मैं एक इवेंट करता हूँ सिटीज के ऊपर हाइपोथेटिकली, विच इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स, कि मैं बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड को अवार्ड करता हूँ, उसके मैं मेयर को बुलाता हूँ, उसके मैं आर्किटेक्ट को बुलाता हूँ, उसके मैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलाता हूँ, 7-8 लोगों को, जो की लोगों को मैं उनका टाइप में फिर कराना चाहता हूँ छोटे से शहर मांडा अलाहाबाद के पास है. हाउ कैन ही replicate that in a raw city? Why can't we have the best city in India as well? कुछ tangible return होना चाहिए. That is what the idea is. क्या इसका बेनिफिट मिला है किसी So we are already in the developing stage. Benefits मिलेगा, presidency आनी है. Post that we will be working towards it, and okay. we will be. So there have been a lot of good technology sharing partnerships that we have already done. जैसे Skolkova है, Skoltech, रशिया का one of the biggest innovation. मॉस्को के पास एक शहर बना रखा है जिसमें रोबोट से लेके it's like a magic dreamland for any entrepreneur currently who's into the technology back. So we have already we have created a board where IIT and Skoltech and all other countries से जो primary technology institutes हैं, they are all coming together for the presidency, where technology sharing will take place, and we'll work on the gaps. I'm like semiconductors, the biggest gap. Lithium renewable rechargeability, renewability is something which we are already talking about, we're looking into. So these are aspects. And AI model, we have very successful US models or Chinese models. Nothing primarily from India. Right. So that is something, again, we are talking to AI companies where, and we have the best of technology. IT hub India रहा है for the longest time. Still why we don't have, because content के बारे में हम लोगों ने बात करना ही नहीं start किया. Right? Right. So we have to start working on that, and that is what the progressive thought of the government is. That is why we're having the biggest AI festival in Impact Summit in February, जो PM had told in France. Okay. Imagine a PM in a speech pointed out ना कि आप लिखिए कि लेफ्ट हैंडेड आदमी की पिक्चर बनाई है, बिल्कुल. वो हमेशा राइट हैंडेड रहेगा, बिल्कुल. So that made the entire world realize. So imagine our brains. Obviously, it was not just PM, it was brains that was giving him all the information Right. that got into the speech. Right. But you need to understand, we have the brains to identify The errors. what can be right, what can be wrong. We have the right people. Why are we not creating platforms? We need to do that. And this is high time that, we work towards it. So you have been part of this, obviously, programs also, government programs like Swachh Bharat Abhiyan, Skill India. Right. Do you think जैसे वो बने थे वैसे इम्प्लीमेंट भी हुए हैं? नहीं हो पाया. क्योंकि First 2 years, they were very effective. राइट. हम 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करते थे, शास्त्री जयंती पे ही करते थे. बिल्कुल. बट हाँ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सेंट्रल दिल्ली में तो बहुत फर्क आया. ऑब्वियसली दे आर लॉट मोर क्लीनर देन व्हाट दे यूज्ड टू बी. बट बाकी जगहों पे नहीं, स्टेट ऑफिसेस में नहीं दिखता है वो इम्पैक्ट. एंड आई फील दैट इसमें कहीं ना कहीं हर आदमी की जिम्मेदारी है. सी क्लीनिंग इज नॉट, सो वन इज द एस्पेक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल सिटीजन शुड स्टार्ट फीलिंग दैट हम इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं. हम अपने क्षेत्र को देखो, मॉल कल्चर ने एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट डाल दिया. लोगों ने कचरा डालना छोड़ दिया दिल्ली एनसीआर में स्पेशली. हॉर्न का भी कल्चर काफी रिड्यूस हो गया. एक टाइम पे दिल्ली में ना हर टाइम बीप 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 बहुत होता था. सो कहीं ना कहीं कल्चर चेंज ऑटोमेटिकली आता है अगर उनको सही एनवायरनमेंट दो. अगर किसी भी आदमी को साफ जगह पे छोड़ दोगे, वो गंदा नहीं करेगा. पहली बार साफ करना जरूरी है. बट प्रॉब्लम क्या है, दैट एंटायर मैकेनिज्म इज अ कंटिन्यूअस मैकेनिज्म, एंड हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, हमारे पास सिस्टम्स भी.
काम चोरी एक अलग एस्पेक्ट है, but then there are government offices that are doing very good. There are a lot of private places that are doing very good. Like स्वच्छता में we made sure when we were doing अभियान से RWA presidents को मिल रहे थे, segregation of waste हम लोगों ने private companies से जो waste collection करते उनसे किया था, wet और dry कर ही रहे थे. साथ में हम लोगों ने उनको we made sure कि उनका जो drop off point है वो कचरा पहाड़ी ना हो, ठीक, वो सीधे हब्स पे जाए जहाँ पे वर्क स्टार्ट हो. दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट को आगे यूटिलाइज किया जाए. तो हर स्वच्छता अभियान सिर्फ ये नहीं था कि सफाई करो अपने क्षेत्र की, उसको आगे कैसे डिकम्पोज किया जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाए, वेस्ट को कैसे बेनिफिट में किया जाए, बायोगैस में किया जाए, जैसे भी किया जाए. बट ये सारी चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है. और दैट वॉज समथिंग विच वी इम्प्लीमेंटेड एंड वी वेरी सक्सेसफुल. एंड 3 district DMs also recognized our work and we were able to clean and is still working on the drive. So it's a never ending process and I believe जितने लोग इस पे जुड़ सके, अपने क्षेत्र पे अपने लेवल पे कर सकें, शायद 10 घर मिलके कर सकें, बिल्कुल सबको करना चाहिए. करना चाहिए. मतलब इस पे मेरा सवाल इसलिए था बिकॉज एक इन्वायरमेंटलिस्ट से मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उनसे मैंने जब बात करा तो उन्होंने बोला ठीक है आप कचरा उठाते हैं घर से, चलो भी मान लिया कि आपने इतना सीख लिया कि उसे कहीं आपने डंप करना है, कहीं पहुंचाना है जहाँ पे उसका साइट है, आपने वहाँ पहुंचा दिया और हमने उसे बोला कि इसे सेग्रीगेटेड फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट हम आगे उठा पाएंगे. करेक्ट, ये बिल्कुल आ गया, इस तक आ गया. और उन्होंने बोला पर आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे इतने बड़े माफियाज बैठे हुए हैं जो चाहते नहीं कि सेग्रीगेटेड फॉर्म में आए बिकॉज लॉस मेकिंग होता है उनके लिए. नहीं, आई थिंक दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज अगेन. अगर आदमी करना चाहे ना, मैं नहीं आदमी तो कर रहा है बट कंपनीज भी कर रही है, थोड़ी हैरेसमेंट्स भी हुई हैं, माफियाज हैं. व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट बिकॉज वो लोग बल्क सेग्रीगेशन में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं जो ऐसे करना सेग्रीगेशन में मुश्किल है ना. अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट आएगा तो उनके हाथ में नहीं आएगा. तो बट वन नीड्स टू रियलाइज कि कितने टाइम तक और क्यों नहीं उसके साथ अगेंस्ट खड़े हो सकते. गॉन आर द डेज ना कि माफिया सिस्टम कैन वर्क. वन हैज टू बी स्ट्रांग इनफ. वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको मदद करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा. तो इट टोटली बॉयज ऑन टू व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग. एंड अगर कोई दिक्कत आ रही है तो देन वी हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल. आई से इट ऑन योर प्लेटफॉर्म, काइंडली अप्रोच में. अगर कोई माफिया ऐसे परेशान कर रहे हैं, अगर सही काम कर रहे हैं आप, वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट द राइट कॉज. आई थिंक it's time to make a voice of the youth and but let's say sir you want to help it out, ठीक है, बट आपको एंड रिजल्ट पता लगा कि कोई मिनिस्ट्री इसके पीछे बैठा हुआ है. कोई फर्क नहीं पड़ता. एक मिनिस्टर थोड़ी ना सब कुछ कर लेगा. अच्छा, एक ही होगा, 100 नहीं हो सकता. इम्पैक्ट लाना है तो कहीं ना कहीं तो चेंज लाना है ना यार. आज हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट एक आदमी से चेंज हुआ. आज हम ऑनेस्टी की बात करते हैं तो शास्त्री जी ने क्या इम्पैक्ट हुआ. आज हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर दिमाग में आते ही है, विराट कोहली आते ही है. राइट, सबने तो इम्पैक्ट नहीं लिया ना, बिल्कुल. एक ही आदमी करता है. वो एक आदमी बनने की कोशिश तो सबको करनी पड़ेगी ना. एंड व्हाट वाज इन इट दिस एक जो आपका बिलियन फुट ट्रिलियन एक So this is a slogan where our Prime Minister advocated that if all the billion get together towards export economy, because we are a part of the industry body, we can make it a trillion economy. We're already a trillion economy, but बिल्कुल. to go higher, so we have to really expedite our export, and that can only happen if our manufacturing setup is of global standards and we're able to fulfill the demands that are globally required. हमारा सेल्फ कंजम्पशन बहुत हाई है. प्रॉब्लम क्या आती है हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज वी और सेल्फ कंजम्पशन इज हाई, एक्सपोर्ट इज गोइंग लो. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इफ यू बिलीव इट और नॉट, आवर बेस्ट ऑफ आवर राइस दैट इज ग्रोन is exported, is not consumed within the Indian market. Best of our coffees is exported, not consumed within us. But why is that? It's because of better pricing. Now if you look at the purchasing power, now there are people, there are food stores coming up in tier 1 जहाँ पे चावल 4,000 रुपए किलो भी बिक रहा है और खरीद रहे हैं लोग. सेब भी, एक सेब भी 800 रुपए का खरीद रहे हैं. Now we are ready to get the best. So there are people who are ready to purchase. There are people who are ready to give the value, get the value out of it. तो अब हम लोगों को we have to change the dynamics and we have to make sure that we have the right facilities to support the global economics, and the more we export, the better it is for our country. सर हम जब लास्ट हम बात कर रहे थे हंगर ऑफ पावर की,
I got to know that you also contested Lok Sabha election 2024. No, I haven't contested. You against Rahul Gandhi. No, my name was being proposed, but and I didn't. You didn't get it. Okay. But still, was it for the keep? I also want to be in power and. I do want to. Like I said, electoral was not my idea, to be very honest. But then there were certain rumors and media happening around it, and they thought that it is a good bet to place someone from Rastaji's family against, and that's how it came into picture. But then, personally, like I said, my aspirations are totally different towards the administrative type. I would like to touch the upper house. So, post a certain level of working and working with policymakers, you're in that habit of interacting with the right kind of intellectual mind. Electoral politics is a totally different ballgame. It's not an easy task. But I don't think any harm if you have a right mindset. Whatever the party gives me as an opportunity, I'm not dumb enough to lose it, to be very honest. Okay. Because you don't get opportunities every day of your life. But then what you want is what you try to aspire for, and that's what you work towards. So that's what I'm trying to do. But then ultimate call is from the leadership itself. And when you say leadership, what all things you see for the future? See, when I talk about, I want to see a nation where every youth has equal opportunity. Acha. I want to see, when we talk about 33% parliament reservation for women, it is actually there. Women do get the seat. I actually want to see that more youth participation happens. That I want to see a day when I am voting, when I retired in the 60s, 70s. If I'm voting that time, majority of my candidates are under 40 and are educated, and they don't have criminal background. Also, that's a utopian thought, but that's what I actually dream for as a leader. Right now, it looks like a utopian thought, but maybe someday. Yes. So before taking this podcast to an end, I just like you to share some anecdote of लाल बहादुर शास्त्री जी, बिकॉज वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा एंड करते हुए जाते हुए कि कभी ना कभी ऐसा ना हो कि आपने कहानी और किससे ना सुना, विच यू थिंक दैट आई शुड शेयर विद अदर पीपल आल्सो. राइट. इंटेग्रिटी की जो मुझे लगती है स्टोरी, उनकी 2-3 है. मैं एक आपको बताता हूँ कि शास्त्री जेल में थे आंदोलन के टाइम पे, और दादी माँ की तबीयत खराब थी. तो उनने दादी माँ से बोला कि आप मिल्क पीजिए एक गिलास भर के. तो उन्हें हाँ बोल दिया, भाई शी विल नॉट रिफ्यूज, भाई पति ने बोला है. तो दादी माँ जैसे थे, पैसे नहीं थे, 6 बच्चे थे, तो सबको करा जाए. तो उन्हें इतना छोटा सा शॉर्ट ग्लास जितना बड़ा दूध का ग्लास में गिलासिया बनवा दिया. अच्छा. और रोज वो चिट्ठी में लिख दें कि मैंने अपना ग्लास दूध पिया. तो एंड इवेंचुअली शी गॉट फाइन आल्सो, हेल्थ आल्सो इम्प्रूव्ड, एंड देन शाशी केम बैक एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग कि तो मैं झूठ बोला, मैंने झूठ क्यों बोला, मैंने ग्लास पिया. सो बट द इम्पैक्ट इज दैट शी केप्ट अ प्रॉमिस, शी ट्राइड टू डिलीवर इट टू हर चिल्ड्रन, एंड whatever you have in life, you try to resources, you have to try to live within that. Beautiful. And that is what is important to growing life. Beautiful. So sir, before closing the podcast, what do you like to say to the, now all yours, stage is all yours, what do you want to say? I think that creating impact, one impact in your life should be your motive. Taking from your name as Impact Stories, I would like to tell you 2 impacts that are very important. Please try and come into the political circuit. And second is, try creating an impact towards your society. Try giving back one thing, whether it's cleanliness, whether it is any of the SDG goals, whether it is trying to help elderly. Try doing one impact, and I think that could make a huge change. If every youth, 65% does one impact, full thing every month, that's where India would change. Beautiful. Thank you so much. So thank you for being on the show. Thank you so much, Ankit, for having me once again.